Then when does this the farming project start and why? Hmm. So one thing that I struggle with is like I said, I have trouble letting go of the urban or the rural, right? I don't want to pick. I feel the both are interrelated और मैं दोनों के पास simultaneously काम करना चाहती हूँ. And one of the reasons I ended up joining the research project that I did is because उसमें दोनों के ऊपर काम हो रहा था. कुछ urban research के ऊपर भी काम हो रहा था और कुछ rural research के ऊपर भी काम हो रहा था. और मेरा जो thesis था वो actually agricultural irrigation की planning के ऊपर था. How the two departments talk to each other and how Right. that planning can be Master's ka integrated. thesis. Even in my sorry, Master's ka thesis? master's ka thesis. Yeah. Okay. So even in my research, it was like the research itself was focused more on water and agriculture, even though my degree was in city planning. So when I came back, my interest was in being able to continue working on both. And so a few things. एक तो ये कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी थी जो कि पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ था, and it was more of a governance project. It was looking at like how you can measure what kind of work agriculture extension workers do and develop systems to assign performance bonuses, things like that. So my work was of that nature. But whenever I'm working on something जिसका मुझे कुछ इतना पता नहीं हो, that makes me uncomfortable. Sounds like मैं ज़राअत के ऊपर काम तो कर रही हूँ, तो मुझे ज़राअत का सर पैर नहीं पता. So एक तो ये incentive था कि अगर मैं जाके एक program design कर रही हूँ, which is all about like acres and nehri pani and groundwater, I should at least have a sense of एकड़ कितना बड़ा होता है, किनाल कितना बड़ा होता है. I should have gone and like walked in the sun, मट्टी को हाथ लगाया और कोई गंदम की शक्ल पता हो. Like I should at least have a like visceral sense of what it means to be in agriculture. तो एक तो ये इंटरेस्ट था. दूसरा ये था कि because my personal interest is always in trying to focus on Pindi Islamabad and learning about that in what I like to call a citizen planner kind of role, like a self-assigned citizen planner role. So I was also learning about planning here in Pindi Islamabad, and my village is an hour away from Pindi. मेरा गाँव भी करीब नहीं है. And it's very urban. उसके इर्द गिर्द अच्छे बहरिया बन गए हैं. So it's sort of come and cut in the city. तो एक सवाल मेरे जहन में ये भी था कि I have a village which is a village. It's an officially rural notified category. ठीक है, लेकिन उसकी पूरी इकोनॉमी साथ के शहर में चलती है, which is true for a lot of Pakistan, right? गरीबों को बड़ा शहर है और इर्द गिर्द के सारे गांव जो हैं डेली लोग कम्यूट करें, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरियां इधर ही कर रहे हैं और गाँव में रहे हैं. And उसकी वजह ये है कि your agriculture is simply not paying off, right? I was listening to a talk on this and वो सुहेल साहब हैं, वो नंबर साइड कर रहे थे कि at the moment in Pakistan, the more than 60% of the rural incomes are coming from non-farm jobs. So our rural is largely not even agricultural. और उसकी वजह यही है कि योर एग्रीकल्चर इज सिंपली नॉट पेइंग ऑफ. लेकिन जो आपका पेरी अर्बन है, जो शहर के करीब इलाके हैं, उनमें ये भी हो रहा है कि बिकॉज दे आर क्लोज टू द सिटी, देयर इज इमेंस प्रेशर्स ऑन द लैंड. आपने अब शहर में कहीं रहना है, आपको जमीन चाहिए, आप शहर के बीच में तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर घंटे की ड्राइव के अंदर अंदर आपको जगह मिलती है, आप वहाँ जमीन लेके घर बना लेंगे. एंड सेम फॉर गाँव के अंदर लोग हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादियां हो रही है, उनको अपने घर चाहिए, उनकी अपनी जमीन है, तो वो क्या करेंगे कि वो जमीन पर घर बना लेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग लाइक दैट. हमारे गाँव की जो शामिलात हैं वो बहरिया को बेची गई, बिकॉज शामिलात आर सॉर्ट ऑफ बैरन वेस्टलैंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी. वो कॉमन लैंड होता है, सो दैट्स इजी मनी फॉर द पीपल. दैट लाइक हम उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, वो खाली जमीन भी पड़ी है, हमें फ्री का पैसा मिल जाए, बेच दो. So एक तो उस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही हैं. हाउसिंग सोसाइटीज को लोग अपने गांव की जमीनें बेच रहे हैं, they're making some quick bucks out of it and they're using that to make assets, send kids to education, build a house, whatever. So there's a lot of demand. या फिर within the village transactions हो रही हैं, एक ने दूसरे से जमीन ले ली और वहाँ पे अपना घर बना लिया, अपने बच्चों का घर बना लिया. So there's a lot of like the whole village market, land market is getting active in cities or in areas around the cities. So the question I had was कि ये जो मेरे गांव की जमीन है ना, ये 2.5 लाख मरला बिक रही है घर बनाने के लिए, स्पेशली अगर उसको रोड से कोई कनेक्शन है. इस वजह से लोग यहाँ पर ज़राअत तो ज्यादा नहीं करते, एटमोस्ट गंदम लगा लेते हैं. तो can we show or demonstrate a successful model of agriculture
that will actually produce enough income that the best use of this land stops being कि इसको बेच के real estate में convert कर. Is that a possibility? And that's the fundamental question that I'm coming from. So to go back to the original question, क्या आपके 2-3 challenges हैं. One being ये real estate बड़ी valuable है, आपकी सारी जमीन तेजी से real estate बन रही है, and we are sort of, I'm assuming, are aware of उसके क्या मसाइल हैं. शहर फैलते चले जा रहे हैं, घर बनते चले जा रहे हैं, उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं है, वगैरह वगैरह. The second is कि what is the best use of the land? Can you put the land to productive use where it then becomes a source of income? Because unemployment is a big issue everywhere, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, especially for youth. And the third is, can this best use be the agriculture? Can you figure out a model of agriculture, given that we are an agricultural country, that's where our most of skill sets sort of comes, या जिसके साथ सबसे ज़्यादा familiarity है, या जो resources हमारे पास available हैं वो agriculture से related हैं. तो क्या आप कोई इस जमीन का ऐसा ज़राई मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि it becomes an employer, it becomes a net positive, it becomes a way of mobilizing the economy of the area, and that hopefully can then answer the question of what should be the rural economy model of Pakistan, जिसका अभी तक मुझे कोई खास जवाब नहीं मिला. And so I love this problem because it's sitting at that nexus of the urban and the rural, right? You're dealing with all of these problems. So yes, that's a very long answer to the question of No, it's great. It's great.